चलो यहाँ से ये विंटर 2019 ठीक है 2-2 starting with the first question ठीक है that's अच्छा जो पहला क्वेश्चन है ना फर्स्ट वन वो शेप ऑफ पी ऑर्बिटल ठीक है वो तो बस डम्बल शेप आपने ड्रॉ करना है that's it ठीक है उसके उसके बेसिकली दो लोब्स होंगे वो जैसा मर्जी आप ड्रॉ कर दो ठीक है अगर वो कहता ना पी एक्स पी वाई पी जेड तो एक्सेस के साथ शो करना पड़ता शेडिंग करने की खैर कोई जरूरत नहीं है अच्छा दैट्स अ पी ऑर्बिटल राइट एन इक्वेशन टू शो द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सिलिकॉन तो वो क्या होगी सिलिकॉन का गैशियस एटम होगा एंड यू गोना ट्राई एंड रिमूव one electron from it. As I explain why there's a general increase in the first ionization. क्या होता है across the period? Shielding remains constant and the number of electrons increases and protons increases. ठीक है, constant shielding, nuclear charge increases. मतलब nuclear charge protons increase. और इसके end में ना हमेशा always write this. Hence, the attraction between the nucleus and valence electrons increases. ठीक है, तो वो हमेशा end में लिखना. Hence, attraction between nucleus and your valence electrons it increases across the period. ये है फर्स्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स वो रिमूव कर रहा है ये हमने किया हुआ तो नहीं पेपर पहले अगर नहीं किया हुआ बना चेंज कर लेते हैं खैर इसको दोबारा कर लेते हैं फर्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट है तो कौन से ग्रुप में होगा ये मतलब which of the groups are not P block excluding 1 and 2 ठीक है just remember group 1 and 2 are basically S block तो बस ग्रुप 1 2 नहीं होगा उसके अलावा all the others are P block तो state and explain तो कौन से ग्रुप में ये successive group 7 why is it group 7 so greater increase in third and fourth ionization energy तो ग्रुप 3 में होगा ना ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है valence electrons are easy to remove उसको नहीं देखना ये तो इनर शेल है ये क्लियर है रियान ये क्लियर है जी सर क्लियर है अच्छा so this one is group 3 और एक्सप्लेनेशन ये होगी कि लार्ज इंक्रीज और लार्ज गैप between third and fourth hence which means that your fourth electron is removed from an inner shell तो आपके आउटर शेल में सिर्फ 3 होंगे अच्छा नेक्स्ट वन ये find the percentage abundance of silicon is 30 the first one is 92.2%. The second one, I say total percentage abundance theory. Silicon 29 and silicon 30. So the total is 7.8%. So if I say that this is X%, remember iski total abundance that's given as, the total abundance is given as 7.8%. So if I take silicon 30 as X%, तो ये बाकी क्या होगा that's going to be 7.8
minus X%. ठीक है, तो इन दोनों का combined 7.8% given था, and he was asking you to find out this one. इसको अगर unknown लोगे, take that as X, तो this one would be 7.8 minus X. अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज कि the relative atomic mass is the percentage abundance multiplied by the atomic mass, which is 28, plus 7.8 minus X% multiplied by 29, plus X% multiplied by 30. और इस सारे को डिवाइड करना है किससे? 100 से. तो 100 से आप सारे को डिवाइड करोगे. The AR is already given. Was the 28.09. So that's already given. This was gonna solve करना, find out what Sir, X can you is. please explain this again? ठीक है, ये वाला पार्ट, ये तो क्लियर ना? फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज के परसेंटेज ऑफ द आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय द आइसोटोपिक मास. ये क्लियर है ना फॉर्मूला? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Sir, why did you write X? अच्छा, अब इशू ये था कि उससे ना 7.8, उसने कहा था ये 92.2% है. उसने कंबाइंड दे दी थी कि उसने कहा सिलिकॉन 29 एंड सिलिकॉन 30 बोथ कंबाइंड दैट 7.8%, यानी इन दोनों का कंबाइंड 7.8% है. और निकालने को वो कह रहा था कि इसकी निकालो, सिलिकॉन 30 की अबंडेंस निकालो. ठीक है, सो कंबाइंड यू नो दैट 7.8%, सो यू हैड टू फाइंड व्हाट दिस इज. तो इफ दिस इज X%, तो वो क्या होगा? वो 7.8 माइनस X% होगा ना, कि अगर ये 1% होता तो दिस मस्ट बी 6.8%, तभी कंबाइंड वुड बी 7.8%. इज दिस आइडिया क्लियर? Yeah. तो हमें इसका नहीं पता था, हमें कंबाइंड पता था that this together is 7.8%. वो अगर ना भी लिखता ना, we would have known कि this is 92.2%, so together these two are 7.8%. तो उसमें if this is X%, so that must be 7.8 minus X%. ठीक है, ये क्लियर है? 7.8 minus X% कहाँ से है? Okay. Yes, sir. और बाकी जो है ना वो यही है कि फॉर्मूला है कि परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय आइसोटोपिक मास, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय आइसोटोपिक मास, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय आइसोटोपिक मास. ठीक है, और रिलेटिव एटॉमिक मास इज गिवन. तो बस इसको सॉल्व करना है. दैट्स गोना बी 2809. क्या होगा? इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. किसी ने सॉल्व किया? माइनस 92.2 28 minus 7.8 times 29. X वाली टर्म्स हम राइट साइड पे ले जाते हैं. So it's going to be 30x minus 29x. यही है ना, 30x minus 29x. हाँ, तो यहाँ पे तो x रह गया. What do we get? What do we get for x? कर लिया किसी ने कि नहीं किया? रेहान किया? सर एक मिनट सर. सर X 6.6 आ रहा है. ठीक है, तो x is coming out to be 6.6%. ठीक है. अच्छा, अगला पॉइंट में ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी था इस पॉइंट पे. सर हाँ जी. सर मगर X की वैल्यू 6.6 आ रही है, हम 7.8 माइनस 6.6 नहीं करेंगे? ये उसने x ही निकाला होगा. He's asking for the percentage abundance of silicon 30. तो यही निकालना था ना. अगर तो वो सिलिकॉन 29 का कहता ना, तो फिर वो 7.8 माइनस x होता. ठीक है,
Clear है Ryan? जी सर. अच्छा, अब अगला part ये कि silicon reacts with nitrogen to form this thing. It's a solid. It's got a melting point of 1900. Insoluble in water, does not conduct. तो किस टाइप की bonding होगी? Metallic, ionic, covalent क्या होगा? Covalent. Covalent. So it's going to be covalent, right? But what type of covalent? कि melting point बहुत high है. अच्छा, ये इसकी bonding होगी. The bonding type is covalent. Structure क्या होगा? ये आवाज आ रही है. Giant covalent. ठीक है, giant covalent या macromolecular होगा, ठीक है. So it's going to be a giant lattice. तो उसको आप ये एक्सप्लेन करोगे कि भाई वो जो एक्सप्लेनेशन होगी 2 मार्क्स तो मिल गए. जो एक्सप्लेन योर आंसर है ना, उसमें बस ये होगा कि it's got high melting points, so large amounts of energy is needed to break a giant network of covalent bonds. अगला पार्ट. ये चीज जो है ना, this is burning, it produces SO2 when it's burnt. तो write an equation, so it's going to be C2H5 SH. तो क्या होगा? It's going to produce carbon dioxide, water and SO2 से खुद ही लिखा हुआ है. But always remember, if he hadn't written SO2, always remember sulfur, always when you burn it, it produces SO2, not SO3. Atmosphere में oxides हो जाता है, लेकिन when you burn it, SO3 is not formed. अच्छा, describe. You can balance this equation on your own. Now, describe why the presence of SO2 in the atmosphere has environmental consequences. Describe one of the consequences. So, why is it? Why does it have environmental consequences? Because it produces acid rain, and you can write an equation about it. ठीक है? ये बस acid rain. ठीक है? That's 1 mark. Consequences क्या होंगे? कि what does acid rain do? Environmental. वो इस पे थोड़ा सा focus रखना. Question को गौर से पढ़ना, ठीक है? कुछ environmental consequences would be that the soil and water bodies become acidic. Second part. Increase in pressure. What will happen to the composition of the equilibrium mixture? किस साइड पे शिफ्ट होगा? कहाँ पे anyone? इधर किस साइड पे शिफ्ट होगा? टाइप ही कर लो. Sir, is it gonna have no effect? ठीक है, it's not going to have any effect because क्योंकि equal moles of gas, right, on both sides.
So on both sides, so no change in position of the equilibrium, बल्कि composition जो no change in composition. I just suggest a temperature needed to increase the yield of SO3 at the yield of SO3. At different equilibrium established at 300 kelvin as shown. Suggest a temperature needed to increase, तो वो क्या increase करो इसकी yield. So it's an endothermic reaction. कब favor होता है? It's going to be favored at a higher temperature. और ये contact process का. What's the temperature that's used in a contact process? Contact process में 450 centigrade is used. You don't use a very high temperature because forward में ये endothermic, ठीक है. तो उसका explanation बस आपने देनी है कि it's an endothermic reaction, so it's going to be favored at a higher temperature. अच्छा, अगला part quickly, formula of oxide. Aluminium oxide जो है that's Al2O3, SiO2, P4O10. Acid-base behavior. First one is basic. Why? क्योंकि पानी में mix करोगे ना, it's going to form NaOH. अच्छा, उसके बाद बाकी जो है SO3 is going to form, it's very acidic. It forms sulfuric acid if you mix it in water. This is also very acidic. It forms phosphoric acid when you mix it in water. और जो last वाला है, that is weakly acidic. It reacts with bases. ठीक है, inorganic notes में सारा लिखा हुआ है, ठीक है, कि acid-based behaviors of the oxides of period 3. उसको एक दफा रिवाइज भी कर लेते हैं. period 3 के जो oxides हैं, you should know what the reactions are. The first one, NaOH, sodium oxide or NaOH, magnesium oxide, they're all very basic. And they react with acids to form salt and water. Even amphoteric reacts with both of them to form NaOH side would form sodium aluminate. Here a weakly acidic, so it will react with hot concentrated NaOH and form silicate. ठीक है, और बाकी दो तो वैसे ही strongly acidic है. तो उसके बाद group 2 elements form stable hydroxides with the general formula of this. The beryllium hydroxide is an amphoteric compound that shows similar properties to aluminum hydroxide. What is meant by the term amphoteric? Can react with both. So it can react with both acids and bases. That's right. And I think equation for the reaction of magnesium hydroxide with hydrochloric acid, ये उधर से copy करना है. It's a base plus acid reaction. Magnesium chloride plus water. ठीक है, so acid plus base. Two methods of preparing strontium hydroxide are shown. State one difference between the observations you would make for each, for reaction 1 and reaction number 2. क्या difference होगा between the observations? Strontium plus water में क्या बनेगा और strontium oxide plus water में क्या बनेगा? इसका क्या होगा metal plus water? What will be produced?
metal plus water में metal hydroxide gets produced plus H2 gas. ठीक है, वो भी लिखा हुआ है group 2 के अंदर. Then whenever you add a metal to water, hydrogen gas gets produced and the reaction becomes more vigorous down the group. So strontium और water का जो reaction होगा, that's going to be very vigorous. ठीक है, H2 gas produce होगी. You're going to see bubbles. Yeah, effervescence. Or strontium oxide plus water के अंदर it will simply dissolve and it will form strontium hydroxide. Okay, so solubility of group 2 oxides and hydroxide, it increases down the group. So नीचे जाते रहोगे ना, it's going to be more soluble, so it's going to dissolve in water and it will form a hydroxide. The difference वही है कि बस इसमें bubbles बनेंगे, तो आप लिख दो कि भाई उसमें reaction होगा and hydrogen gas gets produced. Explain भी करना है. अच्छा, अगला part है state how the solubility of group 2 hydroxide changes down the group. It increases down the group. Down the group. The top one is not soluble, but when you go down the group, it becomes more and more soluble. Calcium hydroxide partially होता है, नीचे जाते रहोगे, it's going to become more soluble. As I calculate the amount of moles of CO2 present in the sample of air at 20 centigrade, so this, I guess, is PV is equal to nRT. So P given, that's pressure. So that's 5.37 kilopascal. So that's 10 power 3. V is given, that's 0.500 dm cube. The dm cube to meter cube, that's divided by 1000. N is moles. R is 8.31 and the temperature is going to be 20 centigrade. So kitna ho gaya? That's 293. So मुझे N calculate करके बताओ कि क्या आ रहा है N. (1.1 into 10 raised to minus 3 mole). अच्छा, 1.1 into 10 to minus. Calculate the mass. तो moles आ गए, ठीक है, carbon dioxide. Calculate the mass of Na2 that would react fully. So carbon dioxide or Na2O2 के moles exactly same ratio. So that means the moles of Na2O2 are going to be exactly the same. So they're going to be exactly the same. So which is going to be 1.1 times 10 power minus 3. So peroxide has a single covalent bond between the two oxygen atoms. Each oxygen atom carries a negative charge. So oxygen के बीच में there's a वो कह रहा है कि single covalent bond है, and each oxygen atom carries a negative charge. तो इसका मतलब है oxygens are forming a covalent bond, just one. तो group 6 में out of 6 there are 5 electrons that are left. और इसके भी there are 5 electrons that are left. So how does each oxygen atom carry a negative charge? So एक electron extra होगा. So this one has 1 electron extra. This one also has 1 electron extra. So that's your dot and cross diagram for peroxide. ठीक है, ये भी clear है? Yes, sir.
अब ये कि Sir, हाँ जी the previous question asked for mass, not moles. अच्छा हाँ mass उसको mr से मल्टीप्लाई कर दो फिर what's the mr that's 23 plus 23 ठीक है that's another 23 plus 16 plus 16 तो खैर mass आ जाएगी ठीक है और ये clear dot and cross diagram उससे कहा था oxygen is forming a single covalent bond and each oxygen has a negative charge so that's one electron extra over here one electron extra that's over here as well. So again inorganic a series of reaction happens PCl5 बना water में डाला तो it would form phosphoric acid and it's an acid so it will react with a base. So what would you observe in reaction 1? कि जब PCl5 बनेगा White उसमें PPT. कौन सा White PPT. ठीक है white solid जिसमें याद रहे inorganic में कि PCl3 is a liquid but PCl5 is a वो solid है यहाँ पे हाँ ये वो P4O10 का लिखा हुआ है SSCl4 is a colorless liquid PCl5 remember is a white solid ठीक है always remember it's a white solid अच्छा what type of reaction this is hydrolysis ये जो chloride का होता है water के साथ that's hydrolysis फिर वो कह रहा है कि शो करो कि this is a redox reaction तो इधर N की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओगे क्या है इसको बल्कि लेट्स गो वन स्टेप फर्दर ये क्वेश्चन रेयर आता है तो हम थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं 5 को भी छोड़ देते हैं लेट्स से दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड हाउ डू यू बैलेंस इक्वेशंस ये नाइट्रिक एसिड पे N की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो ना क्या आ रही है P तो 0 है What is N? 5. ठीक है N is +5 H +1 होता है O -2 होता है उधर N क्या दूसरी साइड पे +4. यहाँ पे N जो है वो और इधर P क्या है +5. +5 है मतलब H +1 था ×3 P नहीं पता था that's X oxygen is -2 × 4 and overall it's neutral so that's all should add up to be equal to 0 तो +5 आता है So how do you balance a redox equation? A redox equation is balanced this way कि N जा रहा है +5 से +4 P जा रहा है 0 से so N gains I guess 1 electron P loses 5 electrons now in a redox equation the electrons gain and loss they have to be equal so N को बढ़ाना पड़ेगा you have to multiply this by 5 if I multiply it by 5 then the number of electrons gained and lost are the same once that happens तो बाकी चीजों को ना conventionally balance कर लो so you've got 5 H's तो वो balance ही हुआ वैसा कुछ balanced है ठीक है so you get exactly the same expression so remember this whenever you have a redox equation it has to be balanced by balancing the number of electrons first
अच्छा तो उसने कहा था इसको बताओ कि ऑक्सीडेशन नंबर से, वो बता दो फिर कि जी +5 से +4 जा रहा है, सो दैट इज रिडक्शन. B goes from 0 to +5, so that is oxidation. Okay, reaction 3 is a neutralization reaction in which NH3 acts as a base. Explain how NH3 acts as a base in reaction number 3. Okay, 3. So how does it act as a base? क्योंकि base क्या करते हैं, accept कर लेते हैं H+1. तो उसने वही किया. It gains H+1. It turns into ammonium. एक extra H+1 it gained. So that's going to be, बताओगे कि भी NH3 जो है वो H+1 gain करके turn into NH4+1. So it gained protons. That's why it's a base. Shape or bond angles, ammonium ions की, so ammonia वैसे तो it was tetrahedral. But when H+1 came along, it got attracted to the lone pair and it became वैसे वो pyramidal था, अब it is tetrahedral. So the angles are going to be 109.5 degrees. ठीक है, we've given the angle. अच्छा इसकी क्या importance है इस compound की industrially? Phosphates, ammonium salts are what? कहाँ पे use होती है? Fertilizers के अंदर, yeah, they use in fertilizers. ठीक है, that's where they're used. अच्छा ये वाला. Okay, I write an equation for the reaction of this to with PCl5 to form. तो write an equation. तो ये alcohols का reaction होता था with PCl5, and it would form. जो OH होता था, that would get substituted. C2H5 Cl form होता था. Now the question is what happens to the rest? कि अगर हम organic के notes देखें ना, this is this reaction. कि जो alcohol होता है ना, it can turn into PCl5, PCl3, it can turn into halogenoalkane. तो alcohol turning into halogenoalkane, तो यही हो रहा है. तो फिर बाकी क्या बनेगा? अभी वो detailed notes में ना full equations given, ठीक है? It's very hard to actually remember the full equation. But sometimes for very few marks, they might ask you for an equation, ठीक है? Oxidation reduction की नहीं, but ये कुछ equations है, they might ask you to write or memorize all those equations. इसमें साथ जो बनता था, that's HCl plus POCl3. Or type of reaction, that's nucleophilic substitution. So halogenoalkanes can also be prepared substitution. So halogenoalkanes can also be prepared by reacting alcohols with hydrogen halides such as HCl and HI. तो अच्छा ये वाला पार्ट फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं. एक और क्लास भी स्टार्ट हो रही है. ये वाला पार्ट 7 बजे ना, मेरी फिर पास में की क्लास है, उसका भी लिंक मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है? आप इसे कोशिश करिए पेपर जो है कंप्लीट कर दो. ये वही आयोडाइड्स का
रिएक्शन वो बेसिकली पूछ रहा है कि HCl किस तरह प्रिपेयर होता है. मैं तो वैसे मोटा बता देता हूँ कि जो inorganic chemistry, what happens in group 17 is that when you look at group 17, Cl-1 is a small ion, does not like to lose electrons. तो वो जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है, you only get a displacement reaction. कि इसका H+1 उठ के जाके उसके Cl-1 के साथ जुड़ जाता है and forms HCl gas. But when you go down the group, तो आपका Br-1, I-1, they really like to lose electrons. They're very good reducing agents. तो आपके NaBr और NaI जो होते हैं वो जाके ना oxidize हो जाते हैं. They lose electrons. And you end up with multiple products. You get into a redox reaction. Because I-1, Br-1, they like to lose electrons. So we push us, that's why HI is not prepared by the reaction of NaI with sulfuric acid. तो उसमें बस ये बताना है कि I-1 is a good reducing agent. And you end up with a redox reaction. तो आपका जो sulfuric acid है ना, that is forced to gain electrons, it would form H2S or it would form a compound with a much lower oxidation state like sulfur. तो वो खुद reduce हो जाता है. तो हर दफा याद रखें, you get a lot of reactions about group 17, ठीक है, इसके अंदर. तो ये कंटिन्यू करते हैं. 7 बजे फिर लिंक भेज दूंगा. We have उस टाइम पे ना फिर we'll have a pass with the class as well, ठीक है. Okay everyone, take care. Hafiz.